हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के असर्शन और रीज़न। इसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो हम पहले ही देख चुके हैं पहली वीडियो में। आप चाहें तो उसको विजिट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन असर्शन दिया है, साइनोबैक्टीरिया आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। रीज़न, दे आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। Yes, these both are true, but reason is not a correct explanation of A, because साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हमारा ग्लूकोज और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह वर्क करते हैं। और जो रीज़न है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट इज़ अ अनोदर फंक्शन, बट इट डज नॉट डायरेक्टली रिलेट टू प्राइमरी प्रोडक्शन. So assertion and reason both are true, but reason is not a correct explanation of A. So B option is a correct answer. Next question. assertion दिया है, आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स. Reason, they possess unique cell wall that lacks peptidoglycan. Yes, these both are true. Archaebacteria have a unique cell wall composition with pseudopeptidoglycan and special membrane lipids, make them resistant to high temperature, salinity, acidity. So A and assertion and reason both are true. तो और reason जो है वो correct explanation भी है, तो A is the correct answer. Assertion and reason true, and R reason is the correct explanation of assertion. Next question. Mycoplasma are smallest free living cell. Yes, true. They have cell wall made of cellulose. No, this is false. Mycoplasma lack cell wall completely. That's why they can pass through bacterial filters and survive in osmotic condition. So A is true, but R is false. C answer is a correct option. Next question. Euglena is considered as connecting link between plants and animal. Yes, this is true. Reason, it show photosynthesis in light and behave like heterotroph in dark. Yes, this is also true. Euglena has a dual mode of nutrition. Autotrophic, photosynthesis भी करेगा, and saprophytic, heterotrophic, phagocytosis भी करता है. Exactly why it is a connecting link. So assertion and reason both are true, and reason is a correct explanation of assertion. A option is a correct answer. Next question. Virus is regarded as living organism. Yes, true. Virus has ability to reproduce only inside host cell. Yes, this is also true. Virus show living characters only inside host cell. मेटाबॉलिज्म प्लस रेप्लिकेशन, आउटसाइड होस्ट सेल के जो बाहर रहता है वो इनर पार्टिकल की तरह एक्ट करता है, बिहेव लाइक अ इनर पार्टिकल. आंसर ए. असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू. रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. Slime molds are included under kingdom Protista. Yes, true. They are multinucleated saprophytic organism with amoeboid movement. Yes, this is also true. Slime molds have unicellular amoeboid stage and multicellular reproductive stage. So protist-like characters, saprophytic plus motile. So both are true, and reason is the correct explanation of assertion. So A answer is correct. Next question. Antibiotic penicillin is obtained from fungus Penicillium notatum. Yes, true. Penicillium is a membrane of Basidiomycetes. No, this is false. Penicillium is a member of Ascomycota. ओके, एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है जो कि पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है. सेक लाइक फंगाई होते हैं. बेसिडियोमाइकोटा इंक्लूड, बेसिडियोमाइसिटीज़ में जो रहते हैं वो मशरूम, रस्ट, स्मट्स. पेनिसिलिन नहीं होता, मशरूम, रस्ट, स्मट ये सब होते हैं. तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Dinoflagellates show red tide in seawater. Yes, true. They have two flagella and possess pigment that impart red color. This is also true. When dinoflagellates population explodes bloom, water appears red due to carotenoid pigments. Harmful to fishes, presence of flagella also adds movements. So assertion and reason both are true, and reason is the correct explanation of assertion. So A option is the correct answer. धन्यवाद.